So now the audio and video is clear to everyone? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Good. So data handling. So the very first thing is, what is data? So data is collection of information. Yes, yes. Data is a information. Information. But the data must be are of two types. One is the primary and second is the secondary. Secondary. Clear? So, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ हाँ ठीक है एक सेकंड so data are of two type, one is the primary and second is the secondary data. So what is basically the primary data? Primary data is basically when there is a information in our mind, when there is a information in our mind. Okay, primary means this when information in our mind, then it is a primary data. Okay, is that clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. डेटा तब तक प्राइमरी रहेगा जब तक वो हमारे पास हमारे ब्रेन में स्टोर है. इफ वी whatever the information stored in our brain for any kind of activity, like just a moment, any kind of activity. Okay, it's like everyone, I think, I don't know, you all making your schedule for a day or not, but the schedule is basically in our mind. And if you write down the schedule in a piece of paper, then it will be a secondary data. Yes, means the written information is a kind of secondary data. And in very first, there is a raw data. And yes, Sarthak, tell me ki what is raw? What is raw? Anyone know what is raw? Sir, may I tell? Yes. Sir, कच्चा. A collection. Yes, ठीक है. A collection of observations gathered initially is called raw data. हाँ, तो अनप्रोसेस्ड हम इसको कहते हैं अन. You are asking me. ठीक है, कोई बात नहीं, बोलने दो. ठीक है, तो हम रॉ को कहते हैं अनप्रोसेस्ड, कच्चा. यस. ये किसने बोला था, नाम तो बताओ, थोड़ा पता तो चले कि कौन. रिया ने बोला था. शिवानी. अच्छा, शिवानी ने बोला कच्चा. सो नाउ शिवानी, यू कैन से अनप्रोसेस्ड. रॉ मीन्स अनप्रोसेस्ड, रॉ वेजिटेबल, रॉ मटेरियल्स. तो दीज आर अनप्रोसेस्ड, मतलब उसके साथ कुछ प्रोसेस नहीं हुआ है. सो द रॉ डेटा बेसिकली कॉल्ड अनप्रोसेस्ड डेटा. एंड वी आर नाउ डूइंग data handling. So we will collect raw data and process it to process it to make it to process sorry we will process the raw data or unprocessed data in a form of
tables, graphs, etc. To understand it more easily and comfortably. Is that clear? Is that Yes, sir. clear ना? ठीक है. Yes, sir. So यहाँ पे लिखा है raw data, a collection of observation gathered initially is called raw data. तो raw data मतलब हो गया unprocessed data. The we just collect. Suppose कि now we are doing such kind of work and we collect information. अब जैसे मैंने suppose किसको सार्थक को एक संभव को क्या शिवानी को एक इंफॉर्मेशन दे दिया कि नाउ एवरी डे यू हैव टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट द बर्ड्स दैट यू सी एवरी डे. हर दिन जो बर्ड्स देखो उसकी एक इंफॉर्मेशन बनाओ. सो जब वो इंफॉर्मेशन बना के मुझे देगी दैट इज अ रॉ डेटा टू मी. उसके बाद फिर मैं उसे प्रोसेस करूंगा. इज दैट क्लियर नाउ? ओके. Yes, Yes, sir. Yes, sir. Now the second thing is the range of the data. Range is basically uh, the minimum and the maximum. The difference between the minimum and maximum is called the range of the data. Everyone must write because ये चीज़ें लिखनी है. This is just an introduction about the chapter और उसके बीच में बहुत सारी चीज़ें आएंगी. So the second thing is the range. Sorry. Range range is equal to highest uh, highest highest value of observation minus lowest lowest value of observation. Clear? Everyone must write, or you can write also like this. uh, Range is equal to maximum minus minimum. This is the short form for the maximum and minimum. Now the next is the statistic. जो ये डेटा हैंडलिंग हम पढ़ रहे हैं, this comes under statistic. It is the science which deal with a collection, presentation, analyze and interpretation of a numerical data. Collection, you all know that how to collect the information. Then presentation, you all know about the how to make the graphs, bar graph. And now if you don't know, Yes. then you will know by know after some time. So we will, and then थर्ड इज द एनालाइज. तो एनालाइज कौन करेगा? जो उसको देखेगा, जो उसको पढ़ेगा, वो उसको एनालाइज करेगा. ओके. एनालाइज मीन्स दैट मेकिंग अ क्विक रिस्पॉन्स. ठीक है, समझ आ रही है बात? कि उसको Yes, देखने sir. के बाद जब हम yes, उसे sir. एनालाइज करेंगे तो देयर इज अ रिस्पॉन्स, और दैट रिस्पॉन्स इज हेल्पफुल टू understand the whatever gathered information. Now the interpretation, और interpretation का मीन्स मतलब होता है कि वहां पर किसी करेक्शन की सॉरी वहां पर कोई करेक्शन की, इम्प्रूवमेंट की और एनीथिंग अगर रिक्वायर्ड है तो वो सॉरी किया जा सके. जैसे फॉर एग्जांपल वी आर मेकिंग क्लास परफॉर्मेंस और क्लास 8 परफॉर्मेंस. ठीक है, अब हमने एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया
क्लास 8 परफॉर्मेंस। ठीक है, क्लास 8 के परफॉर्मेंस का डेटा कलेक्ट किया, मैथ्स का स्पेशली। तो उस मैथ्स के डेटा से हमें पता चलेगा ना कि रेंज क्या है उस क्लास का। यस और नो? Yes, sir. वी गेट Yes, sir. from the information we get the minimum and the maximum marks and the name of that student also. So if there is suppose one minimum, the one student who may score लेस मार्क्स, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एनालाइज। तो एनालाइज किया तो हमें पता चला कि वन ऑफ द स्टूडेंट इन द क्लास 8 who may score less marks in maths in whatever the PTs you have PTs, so in any PTs either 1 से लेके 9 तक में जो भी PTs है, so you all know about that. Then interpretation, then subject teacher or a class teacher together can do uh, some improvement or try to do some improvement or encouraging to that student. तो उससे वो इंटरप्रीट हुआ, मतलब उस वहाँ से हमें पता चला कि ये स्टूडेंट जो है हु स्कोर लेस मार्क्स, तो उसके लिए हम कुछ कर सकते हैं, उसको हम कुछ समझा सकते हैं, उसकी काउंसलिंग कर सकते हैं और उसकी प्रॉब्लम को हम रेक्टिफाई कर जस्टिफाई कर सकते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ स्पेशली कोई प्रॉब्लम, उसको स्पेसिफिक प्रॉब्लम है क्या। तो ऐसी चीज़ों का एनालाइज होता है। So in data handling we all uh, know about this how to do. ठीक है जी। Now the example number 1 given below are marks of mathematics obtained by 20 students. This is out of 100. So the numbers are given here. So अब I want शिवानी मुझे बताओ कि उसमें मिनिमम मार्क्स क्या है। Sir, minimum marks हम्म 14. तो तुम्हें देखो कितना टाइम लगा। So if we arrange it, if we arrange the raw data in ascending or descending order, then I think it will be more easy to see. Yes or no? If we arrange the Yes, data, sir. yes. So sometimes we have to, if there sometimes there is, if there is not more, the data are not very much or more, then we will arrange the data in ascending or descending order. If we are doing this in computer, then you can see there is an option called sort. Yes, सबको पता है कि नहीं? अगर हम ये एक्सेल में करेंगे तो वहां पर एक ऑप्शन आता है कि यू हैव टू शॉर्ट द डेटा Yes, sir. Yes, sir. इधर बाय मिनिमम टू मैक्सिमम और मैक्सिमम टू मिनिमम कर सकते हैं हम ऐसा। और अगर नहीं किया है तो करके देखना, जब स्कूल आओगे तो प्रैक्टिकल में तुम करके देखना सुशील सर के साथ। सो तो if we arrange a data in ascending or descending order, it will be more comfortable to see or observe, because we know that जब हम उसे ascending order में लिखेंगे we know that कि next number is the bigger and the last is the biggest or largest, highest. Yes, clear? Any problem? No, No, sir. sir. So it No, means sir. that कि when while doing this lowest marks, highest marks range, so we have to arrange the data in first ascending or descending. It's not necessary to every time do it ascending order. You want, you can do it in descending order also. Yes, clear? If
this is the question, example number 1. I am giving you or telling you about the example number 1. So first you arrange the datas in ascending order or descending order. Then you will write the lowest marks and the highest marks. So ये शिवानी ने बताया था lowest marks. तो सार्थक, you tell me कि what is the maximum marks? Saksham, 18. 18. Or now Ria, tell me what is the range of the data? Some maximum. Range of the data. What is the range of the data? You can see here, the range is written Sir, here. highest minus lowest. तो मुझे मत समझाओ, just tell me your answer. What is the highest minus lowest? The highest, Saksham ने बताया अभी कि the highest is 18. Sir, may I? No, sir, Sir, 92. highest is 92. The highest is 92 and the lowest is 14. So what is the difference? Means what is the range of this information? 78. Sir, 78. तो इतनी देर लगाते हो तो कैसे होगा? Now see the next example number 2. Given below are the height of 11 boys of a class. So now everyone do this question in your copy. First, what is the first? You have to write the information in ascending or descending order, and then write the above questions. The height of the tallest boy. Shraddha, बताओ. Height of the tallest. 154 centimeter. ठीक है. और युवा बताओ, what is the shortest height? Yuva, please. 128. Very nice. 128 centimeter. Good. And my क्या नाम है उसका, भूल गया. सो अब किससे पूछें? अच्छा ठीक है, शिवानी बताओ कि what is the range of the given data? Sir, 20. 26. So this question you have to do in your copy. Everyone do this question in, you can write classwork example number 2 and write this in your classwork copy. Okay? Clear everyone? Okay. And in the Yes, last sir. two periods, means in your maths period, we will start frequency distribution by making tables with the help of telemarks frequency, and then do the exercise 21A. Okay? Sir, Yes. sir, classwork में questions भी लिखना है. Classwork में Sir, classwork में question भी लिखना है. नहीं लिखना है, मैंने तो पहले बताया कि you just write the solution only in the classwork. Just Okay, sir. but write, if it is example, then you can write it example number 2, then you write the solution. Question is not required to write in classwork. Okay? Yes. Yes, sir. Okay. Yes, sir. So everyone, bye bye, take care, and see you in last two period. Please. Thank you, sir. Everyone. Thank you, sir. Everyone Thank must you, be. sir. Everyone must be in Thank you, maths sir. class. Okay. Bye bye. Okay. Yes, sir.